Assalamu alaikum first year. Today we shall start second poem and the title of the second poem is Night Mail. It is written by W.H. Auden. It's upon page number 53 of your textbook. Before starting the poem, I shall read its theme for you, and theme is upon the page number 54. 54. Its theme is in the form of paraphrasing here. Okay. The poet describes the journey of a coach. इस पोइम में पोइट जो है वो एक कोच का सफ़र बयान करता है. डेट ट्रेवल्स ऑल नाइट. वो कोच सारी रात सफ़र करती है. ब्रिंगिंग मेल. एंड व्हाट डज इट ब्रिंग? इट ब्रिंग्स मेल विच कंटेन्स लेटर्स. अब उसमें क्या क्या शामिल है? एवरी आर्टिकल ऑफ कोरेस्पोंडेंस लाइक लेटर्स. उसमें लेटर्स शामिल हैं. पोस्टल ऑर्डर्स लेके आती हैं. चेक्स लेके आती हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द लैंड, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते हैं. समटाइम्स द जर्नी इज़ अ स्टीप अपवर्ड क्लाइंब. बाजू का क्या होता है? ट्रेन का सफ़र जो है स्टीप, ये होता है वर्टिकल, ढलवान, अपवर्ड ऊंचाई की तरफ, क्लाइंब चढ़ाई. बाज़ुकात इसका सफ़र कैसा होता है? बुलंदी की तरफ चढ़ाई होती है. समटाइम्स बाज़ुकात इट रन स्टेडीली, ये आहिस्ता से आराम से लगातार चलती चली जाती है. ऑन प्लेन्स, खुले मैदानों में. वेदर द रेलवे ट्रैक इज़ एन अपवर्ड असेंट. अब इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं. नो मैटर्स कि अगर इसका जो ट्रैक है वो ऊपर की चढ़ाई की तरफ है और जो स्लोपिंग डिसेंट या ढलवान जो है वो उतराई की तरफ है. अब उसका रास्ता जो है वो डेंजरस किस्म की चढ़ाई है या डेंजरस किस्म की उतराई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. द नाइट मेल इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. नाइट मेल जो है वो हमेशा वक्त पे ही पहुंचती है. एंड फॉलोज़ द टाइम स्केजुअल, और ये टाइम टेबल को फॉलो करती है. द ग्रास लैंड. अब ये कहाँ से गुज़रती है? घास के मैदान से, कॉटन फील्ड्स, कपास के खेतों से, मूर लैंड, वीरानों से. एंड द वाइट क्लाउड्स अबव, और ऊपर जो है सफ़ेद बादल जो हैं अबव, उसके ऊपर. अब उसके ऊपर जो सफ़ेद बादल हैं वो हैं धुएं के, उसके धुएं के जो बादल हैं. ऑल पास बाय क्विकली एंड स्विफ्टली. वो इन सब चीज़ों से तेज़ी से, जल्दी से गुजरती चली जाती हैं. वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ती चली जाती है. द बर्ड्स स्टेयर एट द अप्रोचिंग कोच फ्रॉम द नेस्ट. अब बर्ड्स जो हैं वो देखते हैं, घूरते हैं एट द अप्रोचिंग कोच, आने वाली ट्रेन को, फ्रॉम द नेस्ट, अपने नेस्ट में बैठे वो घूरते हैं इसको. बट द शीप डॉग्स, लेकिन शीप डॉग्स जो हैं अनमाइंडफुल ऑफ द नॉइस, बेखबर होते हैं उस शोर से, ऑफ द मेल कोच, जो मेल कोच के अराइवल से क्रिएट हो रहा होता है वो उससे बेखबर होते हैं. कंटिन्यू टू स्लम्बर. एंड व्हाट डू? दे कंटिन्यू टू स्लम्बर. वो लगातार सोए रहते हैं. नो वन वेक्स अप फ्रॉम स्लम्बर विद द अराइवल ऑफ कोच. उसके आने से कोई भी अपनी नींद से उठता नहीं है. ओनली अ जग जेंटली शेक्स. सिर्फ एक जग हल्का सा हिलता है, हल्का सा लरसता है. एज द कोच पासिस बाय अ फार्म. जब कोच जो है वो फार्म हाउस के पास से गुजरती है. कम टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order.
Letters for the rich, letters for the poor. The shop at the corner, the girl next door. It is a descriptive poem painting the picture of a night mail and its journey through different landscapes. The first stanza, this is the night mail. The first stanza gives us the introduction and the function of night mail. The poet says, this is the night mail, ये है night mail. Crossing the border, and it is crossing the border. Bringing the check, and it is bringing check. And the postal order, and the postal order. Postal order is an official document. Letters for the rich, it also brings letters for the rich as well as letters for the poor. The shop at the corner, it brings something in mail for the shopkeeper who is at the corner, or the girl next door, it also brings something in mail for the girl next door. For the girl next door is a phrase which refers to the people living in our neighborhood. Okay, now it's paraphrasing. In the first stanza, the poet tells us about the introduction and function of night mail in society. It was an era where system of communication was not highly developed, yet the steam engine was invented and people mostly communicated through letters at that time. So this task is well performed by night mail. Night mail is not a passenger train. It is not an ordinary train. It travels at night and brings mail. It travels from country to country. It travels from one area to another area. And it brings mail like the postal order, letters and checks for the people living in different areas and countries. By crossing the borders, it has overcome all kinds of barriers. So it is the only and sole means of communication between the countries, between the borders, between the areas. जब पोएट हमें कहता है क्रॉसिंग द बॉर्डर, इसका मतलब ये है, जब पोएट कहता है क्रॉसिंग द बॉर्डर, इसका मतलब ये है that it crosses all the limits, it crosses all the barriers between different areas. ये तमाम रुकावटें पार कर जाती हैं. And when does the poet say कि it brings check and postal order, it means that it serves the society. It serves the society in different ways. It brings many things for all sorts of people. And when the poet says it brings letters for the rich and letters for the poor, he means to say that night mail treats all sections of society equally.
It does not know racial discrimination. It does not know prejudices. It brings mail. It transports letters for the rich and for the poor. It gets business letters to shopkeepers and letters to the people living in neighborhood. So here in the first stanza, the poet gives us 3 hints about the night mail. First thing is, it is the sole means of communication and transportation between the countries. Secondly, it is free of all racial discriminations and prejudices and serves all sections of society. Thirdly, it is a source of comfort, luxury and consolation for the poor as well as for the rich. Okay, the next stanza. Pulling up Pittock, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Now note the vocabulary. Pulling up, runs up. Pittock is the name of a station where the night mail stops. Steady, stable, steady हो गया, stable, constant, consistent. The gradient है आपका difficult. Gradient means difficult, ascent और descent. मुश्किल उतराई या चढ़ाई. She is on time refers to the punctuality of night mail. Past, passing through. Cotton means cotton fields. Grass means grassy lands. Moorland means huge uncultivated area. Virana, wilderness और heath. Heath, Heath, heath. Boulder is a big rock or pieces of rock shaped by water or weather. Rock or pieces of rock shaped by water और weather. ये क्या हो गया? पथरीली चट्टानें. ठीक है, वो ज़मीनें जहाँ पे पत्थर, राउंड स्टोन्स या जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं. शोवलिंग हो गया थ्रोइंग हो गया फेंकना. ठीक है, एमिट भी कह सकते हैं, ओवर हर शोल्डर. ओके, यहाँ तक कर लेते हैं पहले. दिस इज सेकेंड स्टेंजा. नाउ द पोएट टेल्स अस अबाउट द स्टेडी क्लाइंब ऑफ नाइट मेल. ही सेज that the train runs up Pittock and it stops at different stations. Sometimes the journey is a steep upward climb.
Sometimes it runs steadily on plains. Whether the railway track is an ascent or a sloping descent, चाहे चढ़ाई है या चाहे उतराई है, the night mail is always on time. Here the poet refers two qualities of night mail. The first quality is steady climb. It means that it is constant and consistent in her travel, in its struggle. The gradient is against her, the dangerous slopy path or the dangerous upward path is always against her, but she is on time. So the first quality of night mail is its steady climb, its constant climb, and second quality is she is always on time. Second quality is its punctuality and regularity. It means that the night mail is not concerned with the obstacles or the barriers that come in its way. It seems that it is only concerned with its destination. It does not bother about the difficult paths, the slopy paths, the dangerous paths. It is only concerned with the transportation of the mail. Then the poet says that the night mail passes through different kind of landscapes, like it passes through cotton fields, it passes through grassy lands, it passes through wilderness, it passes through round stony lands, it passes through rocky lands, but it does not, and it is not disturbed by them. The train passes through the cotton fields and the uncultivated lands and the rocky lands without taking any notice of them. The poet personifies the night mail here and compares it to a person who runs to reach his destination. It seems it is only concerned with its destination. Caring for nothing and overlooking everything. And its destination is only the communication or the transportation of mail or correspondence. So, in the first two stanza, we had read the introduction of the night mail, the function of night mail, the nature of the travel of the night mail, the qualities of a night mail, and how the poet presents it before us like a human being. When the poet uses pronoun she or her for the night mail throughout the poem. I shall stop here. Tomorrow we shall discuss the later two stanzas along with the exercise. Till then, goodbye. Allah Hafiz.